भवन्त इन्द्र चान्यश्चराचन्धारयतां भुवम् ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोदितश्रीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वादेवी वाग्देवते वीणामृत्रियवलो महादेव्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतस्मरा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते जयन्ते मङ्गलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते मध्ये गंगायै नमः यमुनायै नमः नर्मदायै नमः गोदावरीयै नमः कावेर्यै नमः ताम्रवर्ण्यै नमः सरस्वत्यै नमः सिन्धवे नमः गंगादिकोटितीर्थेभ्यो नमो नमः ओम वरुणाय नमः सर्वस्यार्थे सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयते ओम वरुणाय नमः धूपमाघ्रापयामि ओम वरुणाय नमः दीपं सन्दर्शयामि ओम आराधिराजाय प्रदह्यताहिने नमो भयं वै श्रवणाय परमये सर्वे कामान् कामकामाय मह्यम् So privileged and so proud to have Amma from SriVidya Temple, Rochester, gracing this occasion. Om Shuklam Varadharam Vishvam Sharivaram Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyane Sarva Vighnopashantaye Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Asmai Devve Shri Durga Saptashati-6 Dhyayami Kayi Lave Masakahare Sakalande Om Hiranyavarnam Harinim Sovarnadagasasrayam Chandram Hiranmayem Lakshmim Jatavedo Mahavaha Durga Saptashati-6 Dhyayami Avahayami Am Soham Pradithapayami Namaha Avahita Bhava Hapita Bhava Sannihita Bhava Sanniruddha Bhava Samukhita Bhava Avakuntita Bhava Hridayaya Namaha Shirse Swaha Shikhaye Vachate Kavachaye Hum Netratraye Vavachate Atraya Phate Om Ajnaya Vidmahe Kanya Bhumai Dhimahe Tanna Garvyat Prachodayate Om Ardram Bhattarinim Bhattim Pingalam Padmamalim Chandram Hiranmayem Lakshmim Jatavedo Mahavaha Om Kayeni Lafrim Hasakalahrim Sakalahrim Shri Nata Mahatarvara Sundaryai Namaha Deepam
धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ जयन्ते मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ इदं भाग्यं तद्विष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सौदयः देव चक्षुराततं तद्विप्रासो विभव्यमोजान् ध्रुवागुं सस्सविन्धते विष्णार्यः परमं पदं च न कर्मणा न प्रजया धनेन ध्यानेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे दहरं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुराध्यसर्गताम् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ह्रीं श्रीं सौः श्रीपरासरस्वती श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय श्रीसाम्बपरमेश्वर श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ ह्रीं श्रीं सौः त्वं ज्वलज्वलशूलिनी दुष्टग्रहं फट् स्वाहा श्री शूलिनी दुर्गा परमेश्वरी श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः श्री सूर्यनारायण श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ नमो नारायणाय अष्टाक्षर श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ ह्रीं श्रीं समस्त प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुलकौलिनी गर्भ रहस्य अधिरहस्य परापर रहस्य योगिनी श्रीपदकाम्बोजयामि नमः। ॐ अथ दशमुद्रां प्रदर्श्य ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै यथाप्रतास्मता। ॐ जयन्ते मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Dear respected Suvasinis, on the occasion of World Shakti Day and on behalf of GRD Iyers GuruCool, it is my great honor and privilege to welcome you all to the Sahasra Suvasini Puja. My name is Gayatri. This is my husband Ramesh Natarajan and our daughter Durga Ramesh. Our family is known as GRD Iyers. We are also known as GuruCool, as we run a free and inclusive Patashala on spiritual studies from our home and on internet. Dear Suvasinis, today, November 4th, 2018, is a defining moment in the Canadian history of Sanatana Dharma. For the first time, a unique event such as World Shakti Day and Sahasra Suvasini Puja is being held in Canada and probably in the North America itself. Today we are celebrating universal womanhood or Shakti phenomenon that pervades the universe with the prayer that may this Shakti unleash its power
for the resurgence of Sanatana Dharma. Today is a clarion call to all women gathered here to actively participate in the rejuvenation of Sanatana Dharma. Dear Suvasinis, you will be shocked to know that the currently available Vedic texts and related spiritual knowledge amounts is believed to be only a fraction of the entire Vedic knowledge base. The remaining portion is lost over the centuries. Although a series of foreign occupation of Bharat Mata may be given as one reason for this, it is an undeniable fact that many misconceptions and misinterpretations in the Bharatiya society equally contributed to the loss of this knowledge. Many of you wonder on our extravagant focus of women and their empowerment. Let us understand why. Women constitute half of the community. Though we worship Devi, the Devis in our community have traditional practices that bar them from spiritual learning. Not surprisingly, we do not find such issues in our glorious Vedic past. Many experts say that post the Vedic period, due to several foreign invasions and with the course of time, there was a radical change and decline in women's position in society. Of course, the devious work of Lord Macaulay to destroy Bharat's Gurukula based on education system is well documented and was a contributing factor. Loss of patronage of the kings to Gurukulas was another. To compound that, denying women access to Vedic education without any basis of sanction of the Shastras, the position of women deteriorated, leading to an unbalanced and weak society. Let us now turn to the remaining 50% of the community who are men. Malicious interpretations of caste, creed, and race denied access to 90% of them to Vedic learning. This led to a disillusioned view of a glorious and inclusive Vedic culture and the moving away from the Vedic lifestyle. And of the remaining privileged few who actually took the courage to lead a Vedic lifestyle, it is anyone's guess as to how many of them are doing it the right way. GuruCool has done research and has excellent documentary evidence of our Shastras supporting learning of Vedas by all, especially women. Brihadaranyaka Upanishad is the best cited example of the Vedic era where one can see women taking part in philosophical discussions in the courtyard of a king. Why go so far? Even during Sri Adi Shankaracharya's time, we all know that the judge of the debate between him and Sri Mandala Mishra was a later highly educated wife called Ubhaya Bharati. When we quote the above examples, the usual retort we receive from the so-called knowledgeable ones is a dismissal. Times were different then. Today we are in Kali Yuga. I leave you to draw your conclusion to the existing mindset among the so-called guardians of our Sanatana Dharma. They even state confidently that reciting of our scriptures will harm women. We have researched this too. There is no pramanam or evidence for this. Are all those undergoing physical distress reciting our scriptures? Please take my own example. I have been learning, reciting and performing and have been receiving immense spiritual benefits. At this juncture, I would like to pay our respects to our Manasika Veda Gurus, the great Shalakare brothers. In their interview to us that is available in YouTube, they have openly stated that women should learn and chant Vedas. Our Veda Guru's daughter herself is a renowned Veda teacher, which is not acceptable. Our research further shows that the tradition of restricting women from learning Vedas and other scriptures flows from a division of labor issue where it was considered that a woman should look after the home rather than pursue learning. In today's world, that is called gender discrimination and is unlawful. In today's world, the rate of change is immense. Respected Suvasinis, we cannot allow further deterioration of our Vedas. Towards this objective, we decided to follow Mahatma Gandhi's great quote, "Be the change you want to see." We realized that where there is discrimination, there can be no spirituality.
In our strong stance, we faced and continue to face opposition, but we marched on relentlessly and fearlessly. When Devi and Mahadev are with you, should you ever have fear and doubt? We understand that some will never change and that our time was best spent on doing positive work. We humbly suggest that let's all learn what we can. If you are not interested in learning, let us at least encourage those who want to learn. And most importantly, let us not stop someone from learning by quoting vague hearsay that is totally unsupported by our Shastras. Our Sanatana Dharma allows challenging and asking questions. Let us exercise that right and get educated for our children, for our future. Swami Vivekananda had declared that Sanatana Dharma will rise from the west. Let us come together to prove true the words of this great man. Dear Suvasinis, we hope that when we invoke Devi in you and worship you as Devi, you, the Sahasra or 1,000 forms of Devi, will bless us for success in our goal of promoting inclusivity of women empowerment in the learning and performance of Vedic Pujas and Yajnas. We hope that you have a wonderful and spiritual experience today. Jai Chandi! Jai Chandi! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Durga Mata ki! Jai! Om Maharavanya Sevadhaye Namaha. Om Sarvarunaya Namaha. Om Anavadhyaye Namaha. Om Sarvabharana Bhushitaye Namaha. Om Shivakameshwaram Kasthaye Namaha. Om Shivaye Namaha. Om Swadhina Vallabhaye Namaha.
प्रातर्ये नमः ॐ राक्षसर्ये नमः ॐ रामाये नमः ॐ रमणरम्पटाये नमः ॐ काम्याये नमः ॐ कामकलारूपाये नमः ॐ कदम्बकुसुमप्रियाये नमः ॐ कल्याण्ये नमः ॐ जगदीकन्दाये नमः ॐ करुणारससागराये नमः ॐ कलावत्ये नमः ॐ कलालापाये नमः ॐ कान्ताये नमः ॐ कादम्बरीप्रियाये नमः ॐ वरदाये नमः ॐ वामनाय नमः ॐ वारुणीमदविह्वलाये नमः ॐ विश्वाधिकाये नमः ॐ वेदवेद्याये नमः ॐ विद्याचलनिवासिन्ये नमः ॐ विधात्रे नमः ॐ वेदजनन्ये नमः ॐ विष्णुमायाये नमः ॐ विलासिन्ये नमः ॐ क्षेत्रस्वरूपाये नमः ॐ क्षेत्रेश्यै नमः ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्ये नमः ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताये नमः ॐ क्षेत्रपालसमर्चिताये नमः ॐ विजयाये नमः ॐ विमलाये नमः ॐ वन्द्याये नमः ॐ मन्दार्जुनवत्सलाये नमः ॐ वाग्वादिन्ये नमः ॐ वामकेश्यै ॐ चिदेकरसरूपिण्ये नमः ॐ स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसत्तत्यै नमः ॐ परायै नमः ॐ प्रत्यक्षितिरूपायै नमः ॐ पश्यन्त्यै नमः ॐ परदेवतायै नमः ॐ मध्यमायै नमः ॐ वैखरीरूपायै नमः ॐ भक्तमानसहंसिकायै नमः ॐ रामेश्वरप्राणनाथ्यै नमः ॐ कृतज्ञायै ॐ निर्वाणसुखदायिन्ये नमः ॐ नित्याषोडशिकारूपायै नमः ॐ श्रीकण्ठार्थशरीरिण्ये नमः ॐ प्रभावत्यै नमः ॐ प्रभारूपायै नमः ॐ प्रसिद्धायै नमः ॐ परमेश्वर्यै नमः ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ॐ अव्यक्तायै नमः ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ॐ व्यापिन्यै नमः ॐ विविधाकारायै नमः ॐ विद्यास्वरूपिण्यै नमः ॐ महाकामेशनैरकूलाह्लादकौमुद्यै नमः ॐ भक्तहाततमोभेदभानुमत्पानुसन्तत्यै नमः ॐ शिवदूत्यै नमः ॐ शिवाराध्यायै नमः ॐ शिवमूर्त्यै नमः ॐ शिवङ्कर्यै नमः ॐ शिवप्रियायै नमः ॐ शिववरायै नमः ॐ शिष्टेष्टायै नमः ॐ शिष्टपूजितायै नमः ॐ जडात्मिकायै नमः ॐ गायत्र्यै नमः ॐ व्याहृत्यै नमः ॐ सन्ध्यायै नमः ॐ सूर्यै नमः ॐ नलिन्यै नमः ॐ आरक्तवर्णायै नमः ॐ विलोचनायै नमः ॐ रागिण्यस्वरूपिण्यै नमः ॐ स्वादिष्ठानाम्बुजगदायै नमः ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ॐ शूलाध्यायिकसम्पन्नायै नमः ॐ पीतवर्णायै नमः ॐ अतिगर्भितायै नमः ॐ मेयोनिष्ठायै नमः ॐ मधुप्रीतायै नमः ॐ पण्डित्यादिसमन्वितायै नमः ॐ धर्जन्यासक्तहृदयायै नमः ॐ काकिनीरूपधारिण्यै नमः ॐ मूलाधाराम्बुजारूढायै नमः ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ॐ अस्थिसंस्थितायै नमः ॐ अङ्कुशादिप्रहरणायै नमः ॐ वरदादिनिषेवितायै नमः ॐ मुग्धोदनासक्तचित्तायै नमः ॐ साकिल्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ॐ आज्ञाचक्रार्चितयायै नमः ॐ शुक्लवर्णायै नमः ॐ षडाननायै नमः ॐ मज्जासंस्थायै नमः ॐ हंसवती मुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ॐ हरिद्राणैकरसिकायै नमः ॐ आग्नेयरूपधारिण्यै नमः ॐ कात्यायन्यै नमः ॐ कालहस्त्यै नमः ॐ कमलाक्षिनिषेवितायै नमः ॐ ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः ॐ प्राणिनीकुसुमप्रभायै नमः ॐ मृगाक्ष्यै नमः ॐ मोहिन्यै नमः ॐ मुख्यायै नमः ॐ मृडान्यै नमः ॐ मित्ररूपिण्यै नमः दीपिकायै नमः ॐ दाक्षायण्यै नमः ॐ दैत्यहन्त्रे नमः ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः ॐ धराधोरदीर्घाक्ष्यै नमः ॐ धरहासोज्ज्वलमुख्यै नमः ॐ गुरुमूर्तये नमः ॐ गुणनिधये नमः ॐ गौमात्रे नमः ॐ गुहजन्मभुवे नमः ॐ देवेश्यै नमः ॐ दण्डनीतिस्कायै नमः ॐ धराकाशरूपिण्यै नमः ॐ
त्रिशत्वन्धाय नमः ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ॐ त्र्यक्षर्यै नमः ॐ दिव्यदन्ताय नमः ॐ सिन्दूरदकाञ्चिताय नमः ॐ उमायै नमः ॐ शैलेन्द्रतनयाय नमः ॐ गौर्यः ॐ लज्जाय नमः ॐ ब्रह्मादिवन्दिताय नमः ॐ भवदासुराविष्टे नमः ॐ पापारण्यनिवारणाय नमः ॐ दौर्भाग्यदूरवादूराय नमः ॐ जराध्वान्तरविप्रभाय नमः ॐ भाग्याब्धिचन्द्रिकाय नमः ॐ भक्तचित्तवेदिगणाय नमः ॐ रोगगणोदये नमः ॐ पृथ्वीराजमुखारिकाय नमः ॐ महेश्वर्ये नमः ॐ महाकाले नमः ॐ महाव्यासाय नमः ॐ महाशनाय नमः ॐ अपर्णाय नमः ॐ चण्डिकाय नमः ॐ चण्डमुण्डसुरशूलिने नमः ॐ शराशरात्मिकाय नमः ॐ सर्वलोकेशे नमः ॐ विश्वधारिणे नमः ॐ त्रिवर्गदात्रे नमः ॐ सुभगाय नमः ॐ त्र्यम्बकाय नमः ॐ त्रिगुणात्मिकाय नमः ॐ स्वर्गापवर्गदाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ प्रभापुष्पनिहारतये नमः ॐ ओजोवध्ये नमः ॐ भिजराय नमः ॐ यज्ञरूपाय नमः ॐ प्रियप्रदाय नमः ॐ आद्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। आप सभी उपस्थित मातृशक्ति को कोटिशा नमन। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हिंदू संस्कृति केंद्र में ये देवी का सहस्र नाम जो सुवासिनी अर्चन, तो देवी का सुवासिनी अर्चन पूजन चल रहा है और आप सब आते हैं पूरे जीटीए से, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हैं इस मंदिर में। और हमारे श्रद्धा श्री रमेश नटराज जी जो आप सबों के गुरु सत्ता पर रखते हैं, तो ये सब आयोजन हो रहा है। और इसमें आज 4 चरण जो लग रहे हैं सोने में सुहागा, और हम सभी का परम सौभाग्य है कि पूरे विश्व में हमारी हिंदू संस्कृति और हम सभी का जो प्रतिनिधित्व करने वाली भारत माता के महान सपूत जिनके प्रसिद्ध सुब्रमण्य स्वामी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और प्रधान आचार्य जी, यहाँ उपस्थित सब इस मंदिर के दुर्गा माता के भक्तगण, when invasions took place in our country from abroad, that physical strength became a factor in society. And we are again now entered in the 21st century. The United Nations has declared this as the knowledge century, and therefore men and women are once again on an equal platform. Judging by the exam results of the school certificate in Delhi, it appears that women are more intelligent than men. But our history repeats with the importance of women. As an example, I've told many people, I said in many meetings also, that Brahma had found a cabinet and he distributed 4 portfolios, and the 3 of the most important were to women. For example, education went to Saraswati, finance went to Lakshmi, and defense went to Durga. And
Male god got only one portfolio, that is information broadcasting to Narad Muni. When Adi Shankara moved through the whole of India to convert everybody from Buddhism to Hinduism through discussion, what was called as Shastra, he ran finally into Madan Mishra in Bihar. In Rajgraha, he challenged him to a debate. He said, if I lose, I will become a Buddhist, and if you lose, you become Hindu. The real question was, these two are the biggest scholars, one of Hinduism and the other of Uttarakhand, school, but more Buddhism. And who would umpire it? And Adi Shankara then suggested, your wife is a scholar, let her umpire it. There is no question that a woman must be a chattel for the man or the husband. She could even judge her husband in a public debate. That was the status that we enjoyed. Even if they go to Disneyland, they will be saying, why does he have big ears, Mickey Mouse? Why does he have small ears like us? So questioning mind is encouraged. But in India, if a child asks more than 2 questions, they say, shut up, otherwise I'll give you a slap. Now in India, only one thing, a positive mind Indian public. Whether you live here or even if you live here, you have tremendous impact on our Indians in India. So while culturally you be an Indian, of course if you are a citizen of America, your first loyalty politically is to America. But culturally, we are still one people all over the world, and therefore for this culture to have renaissance, a new positive attitude necessary that women can do, and that's why I'm very pleased to come here and address you. Thank you. Dr. Subramanian Swami, we are so grateful for him to be here and grace Sahasra Suvasini Puja and Gold Shakti Day, which we are celebrating today, for empowering women for the chanting of Vedas and Upanishads and learning Tantra. It's a wonderful sign from Durga Devi and Sri Lalita Mahatrapur Sundaris that Dr. Swami is here with us on this day, gracing this occasion, and who stands for women empowerment in learning. Please give him a big hand. Dr. Swami is also going to perform a small, short, sweet Suvasini Puja by giving gifting this vastram to a Suvasini. Please come, Dr. Swami. Om Jayanti Mangalakali Bhadragali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swada Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Ya Devi Sarva Bhutesha Matrurupena Samsita Namastasyai 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 Namo Namaha Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Ya Shri Swayam Supratinam Bhavaneshwa Lakshmi Papa
नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब गदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतकण्ठधाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जरस्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐनुजहुं कृतिमातृनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीजसमुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महामवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गरणक्षण सङ्ग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गर सद्भट शृङ्ग कथावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग घटद्भटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभै गायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे दुमि दुमितामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत दिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथते इतते तथाभिनयोदर नृत्यरते हासविलासहुलासमयि प्रणतार्थ जनेमित प्रेम भरे दिनिकिट दिक्खट दिक्खट दिनिध्वनि घोर मृदङ्ग विनामर सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्ररुदे सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मल्लिक मल्लिक रल्लक मल्लरते विरचित मल्लिक 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 चिल्लिक पिल्लिक वक्त्रमुते सितकृत पुल्लस मुल्लसितारिण सल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. Dear Suvasinis, we are going to offer Pushpam to you. We need your Ashirvadam. Kindly raise your hand in Ashirvada Mudra to give Ashirvadam to us. Om Yavaitam Brahmana Vedam Amritena Vritam Buri Tasmai Brahma Brahmacha Ayakirtim Brajan Dhatu Om Jayanti Mangala Gali Bhadrakali Kapalini
तस्य परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधं शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सा परादोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेन्द्राज्ञायन्योनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यातिगुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी श्री दुर्गा अर्पणमस्तु श्री महात्रिपुर सुंदरी अर्पणमस्तु ओम अस्मिन् समस्त सुवासिनी आवाहित श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम शांति शांति शांति. So as we bring today's First in Canada World Shakti Day and Sahasra Suvasini Puja to a close, let us take a moment to remember and thank all those who made this immensely spiritual event possible through their hard work, commitment, and self-belief. Firstly, we thank Shri Lalita Mahatripura Sundari and Paramashiva for blessing us with this great spiritual event.
have Ruby ji, who is going to give us an address on this occasion of World Shakti Day, Sahasra Suvasini Puja. Thank you. Namaste, Survasinis. It's such an honor to be amongst all of you today. And thank you so much for allowing me to learn what the true meaning of the word Survasini is, and to be amongst all of you. And I feel really emotional and overwhelmed that I was a part of this ceremony that's taking place for the first time in North America, World Shakti Day. And may God give you all lots of Shakti in the days and years to come, because I think the road that you're going down, you will need a lot of Shakti and a lot of support. But I can feel the love and the support in this room, and I know that you're all going to work hard to go down this path to make sure that we too can have the knowledge and the love and the grace and everything that's been taught to us through the Vedas from God. Our government, when we took office, now on a different note, the Prime Minister made a gender-balanced cabinet, and we faced a lot of criticism that, oh, perhaps we don't have the most deserving women in cabinet, and making a gender-balanced cabinet was just for, just to make it balanced. But I argue that that's not the case. When women aren't given the opportunity, you can't see all that they hold and all the knowledge and power and everything that they're capable of. So I can see there's a lot of emotion in this room tonight too. And I'm so honored to be amongst leaders and your family that's been doing this and giving these women an opportunity to show their inner talent and the power that they hold. And I know you all hold very special power. I look forward to continue working with this group and seeing what you achieve. I'm glad that we're questioning why we do things. On my many trips to India, I often used to think it's such an interesting paradigm. You know, we worship so many devis, just like you said, and I've seen that. I've gone into many mandirs in India and here, and we worship them, but then in practice, we don't see that same respect and love shown. And I don't know, sometimes weighing the religion and culture, there's always these differences. And so we need to make sure that our culture follows the teachings of our religions and the true teachings, because sometimes teachings are taken out of context over time. And as has been explained in the speech that we heard today, I've learned a lot too. There's a lot of reasons we've gone down a different path. But it's never too late to correct all of that and to make sure that we're an equal part in faith, in religion, in the religious spiritual life, and an equal part in family life and in the work life out there. So thank you all for letting me experience this, and I wish you all the very best. Thank you. I have a certificate of appreciation too. Thank you for all that you've been doing through GuruCool for all the women in our community. Thank you. Now, Gayatri is going to honor Ruby ji with a shawl for gracing this occasion. Thank you, Ruby ji, for coming and taking time to busy schedule. We appreciate it. Thank you so much. It's our honor and privilege to be of service to you. Thank you. Om Vedic Chanting परिसेविताये नमः ओम गिरिचक्रधारूढवदनाथापरस्तुताये नमः ओम ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगाये नमः ओम पट्टसैन्यवधूर्दुष्टशक्तिविक्रमहर्षिताये नमः ओम नित्यापराक्रमाटोपरिणि
सुराये नमः ॐ भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दिताये नमः ॐ मन्त्रिण्यम्बाविर्जतविशुद्धवरदोषिताये नमः ॐ विशुक्रप्राणहरणवाराही वीरनन्दिताये नमः ॐ कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वराये नमः ॐ महागणेशनिर्भिन्नविघ्नेन्द्रप्रहर्षिताये नमः ॐ भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्ये नमः ॐ कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः ॐ महापाशुपतास्त्राग्निर्बद्धासुरसैनिकाय नमनायै नमः ॐ कुलान्तस्थायै नमः ॐ कौलिन्ये नमः ॐ कुलयोगिन्ये नमः ॐ अकुलायै नमः ॐ समयाम्प्रस्थायै नमः ॐ समयाचारतत्परायै नमः ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः ॐ ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्ये नमः ॐ ममताहन्त्रे नमः ॐ निष्पापायै नमः ॐ पापनाशिन्ये नमः ॐ निष्क्रोधायै नमः ॐ क्रोधशमन्ये नमः ॐ निर्लोभायै नमः ॐ लोभनाशिन्ये नमः ॐ मनोमये नमः ॐ महेश्वर्ये नमः ॐ महादेव्ये नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ मृडप्रियायै नमः ॐ महारूपायै नमः ॐ महापूजायै नमः ॐ महापालकनाशिन्ये नमः ॐ महामायायै नमः ॐ पद्मरागसमप्रभायै नमः ॐ पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः ॐ चिन्मये नमः ॐ परमानन्दायै नमः ॐ विज्ञानघनरूपिण्ये नमः ॐ ध्यानध्यातृभेदरूपायै नमः ॐ धर्मायै नमः ॐ शुद्धायै नमः ॐ प्राज्ञातिकायै नमः ॐ तुल्यायै नमः सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ गोविन्दरूपिण्ये नमः ॐ संहारिण्ये नमः ॐ रुद्ररूपायै नमः ॐ किलाधारकर्ये नमः ॐ ईश्वर्ये नमः ॐ सदाशिवायै नमः ॐ अनुग्रहाय नमः ॐ पञ्चकृत्यपरायणाय नमः ॐ भानुमण्डलमध्यस्थाय नमः ॐ प्रेयर्ये नमः ॐ भगवानिन्ये नमः ॐ पद्मासनाय नमः ॐ भगवद्ये नमः ॐ पद्मनाभसहोदर्ये नमः ॐ प्रियाय नमः ॐ कल्याणे नमः ॐ जगदीगङ्गाय नमः ॐ करुणाप्रसाराय नमः ॐ कलावत्ये नमः ॐ कलारापाय नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कादम्बरीप्रियाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ वारुणीमदविह्वलाय नमः ॐ विश्वाधिकाय नमः ॐ वेदवेन्द्राय नमः ॐ विद्याचक्रवासिन्ये नमः ॐ विधात्रे नमः ॐ वेदरण्ये नमः ॐ विष्णुवायाय नमः ॐ विलासिन्ये नमः ॐ क्षेत्रस्वरूपाय नमः ॐ क्षेत्रेश्ये नमः ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्ये नमः ॐ क्षेत्रधीरमुक्ताय नमः ॐ क्षेत्रपालसमर्शिताय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ वन्दादिवत्सलाय नमः ॐ वाग्वादिभ्ये नमः ॐ वागकेश्ये नमः ॐ भक्तिमण्डलवासिभ्ये नमः ॐ भक्तिमण्डलपरिग्राहे नमः ॐ भजनादिमोचिभ्ये नमः ॐ सद्गुणाशेषवाचरिकाय नमः ॐ सदाचारप्रवर्तिकाय नमः ॐ तापत्र्यासन्तत्तसमाकालसचिवाय नमः ॐ तरुण्ये नमः ॐ तापसाराध्याय नमः ॐ तरुवत्याय नमः ॐ तमोपहाय नमः ॐ चित्ते नमः ॐ तत्पररक्षाध्याय नमः ॐ चिरेकरस्वरूपिण्ये नमः ॐ स्वात्मानन्दविभूतब्रह्माध्यानसंकर्त्रे नमः ॐ पराये नमः ॐ प्रकृतिरूपाय नमः ॐ पश्यन्ते नमः ॐ परदेवताय नमः ॐ मध्यमाय नमः ॐ वैखरीरूपाय नमः ॐ भक्तमानसंसिताय नमः ॐ रामेश्वरकराणाय नमः ॐ कृतज्ञाय नमः ॐ कामपूजिताय नमः ॐ श्रीकारणसम्पूर्णाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ ज्ञानधरस्थिताय नमः ॐ पूर्णाभिनिलयाय नमः ॐ विष्णुमण्डलवासिन्ये नमः ॐ प्रभोजागत्रमाराध्याय नमः ॐ रहस्यपरकल्पिताय नमः ॐ सत्यप्रसादिन्ये नमः ॐ विश्वसाक्षिन्ये नमः ॐ साक्षिवर्जिताय नमः ॐ शरण्यदेवतायुक्ताय नमः ॐ षाड्गुण्यपरिपूरिताय नमः ॐ नित्यचिन्नाय नमः ॐ निष्परमाय नमः ॐ निर्वाणसुखदायिन्ये नमः ॐ नित्याशोरशिवारूपाय नमः ॐ श्रीकण्ठाधश्रीविद्ये नमः ॐ प्रभावत्ये नमः ॐ प्रभारूपाय नमः ॐ प्रसिद्धाय नमः ॐ परमेश्वर्ये नमः ॐ मूलप्रकृत्ये नमः ॐ अमरकराय नमः ॐ जगदानन्दस्वरूपिणे नमः ॐ व्यापिन्ये नमः ॐ विधाकाराय नमः ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः ॐ महाकामेशनेन तुलाभारगौमध्ये नमः ॐ भक्तभागतमोपेदभागवद्भागवसन्तते
शिवभद्रे नमः ॐ शिवदूत्ये नमः ॐ शिवाराध्याये नमः ॐ शिवमूर्ते नमः ॐ शिवकन्ये नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ शिवपराय नमः ॐ शिष्टेष्टाय नमः ॐ शिष्टपूजिताय नमः ॐ आपदयाय नमः ॐ सुप्रकाशाय नमः ॐ मनोवाचामनोजाय नमः ॐ चित्तये नमः ॐ चेतनारूपाय नमः ॐ जयशक्ते नमः ॐ जयात्माय नमः ॐ गायत्रे नमः ॐ जाहृते नमः ॐ सञ्जाय नमः ॐ विजयनिषेविताय नमः ॐ चक्रासनाय नमः ॐ तस्मै नमः ॐ तुभ्यं नमः ॐ मह्ये नमः ॐ पञ्चकोशान्तरस्थिताय नमः ॐ निःसीममहिम्ने नमः ॐ नित्ययौवनाय नमः ॐ मनशालिन्ये नमः ॐ मनोभिरक्ताक्षे नमः ॐ मनपादकण्डपते नमः ॐ चन्द्रग्रहचिद्धान्ये नमः ॐ चाम्बेरसमप्रियाय नमः ॐ कुशलाय नमः ॐ नवनारायणाय नमः ॐ गुरुप्रसादे नमः ॐ कुलेश्वरे नमः ॐ कुलपिण्डालयाय नमः ॐ गौरवाणपरसेविताय नमः ॐ कुमारनाथाय नमः ॐ कृष्णे नमः ॐ कृष्णे नमः ॐ मध्ये नमः ॐ कृष्णे नमः ॐ शान्ते नमः ॐ सत्यमध्ये नमः ॐ कान्ते नमः ॐ वल्लीभे नमः ॐ दिव्यनाशिन्ये नमः ॐ तेजोवत्ते नमः ॐ त्रिनयाय नमः ॐ कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवताः तत्र मोदन्ते तन्मे शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ कैलासे महतलहरे सकलहे श्रीरमातृसुन्दर्यै नमः ॐ जयन्ते मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ कैलाहरे भगवहरे सकलहरे श्रीलतामहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कल्पमेनाञ्जनसन्दर्शयामि रक्ष रक्षां धारयामि नमस्करोमि सकलाराधनेषु वर्जितम् अनया भुजा श्रीलतामहा